Mommy looked like a Kashmiri when she was in Srinagar. When writer's mother was in Srinagar, she looks like a Kashmiri lady. She learnt embroidery. उन्होंने वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी सीखी, मीन्स कढ़ाई सीखी. एम्ब्रॉयडरी किसको कहते हैं? कपड़ों पे जो वर्क किया रहता है उसे हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं. फ्रॉम शॉल्स टू हैंडकरचीफ ऑल had her stamped impression, the chinar leaves and pretty flowers. In embroidery, she learned shawls, handkerchiefs, and many more. A great designer, she stitched clothes that were matchless. Each dress was a unique one. Her saris with intricate embroidery were definitely a class apart. She stitched colorful clothes for all deities and even knit woolens for them. She was an expert in every field. In the evening, she would often play badminton with her friends. एक बहुत ही महान ड्रेस डिज़ाइनर थी जो ड्रेस डिज़ाइन करती थी. वह कपड़े बहुत ही मैचलेस सिलती थी, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं होता था. हर कपड़े जो है बहुत ही अलग रहते थे और साड़ीज़ भी बहुत ही अच्छी रहती थी. एम्ब्रॉयडरी जो उस पर रहती थी उसका भी कोई जवाब नहीं रहता था. वह कलरफुल कपड़े सिलती थी और उलन्स भी बना देती थी. उलन्स मीन्स जो कपड़े हम ठंड में पहनते थे. फ्रॉम दिस we see that writer's mother has so many qualities, means she is expert in every field. Sometimes she played badminton with her friends in the evening. Mothers are special for their children, so no mother should neglect her health. She would go for a regular checkup. Children always miss their mother no matter how old they grow. मदर्स जो है अपने चिल्ड्रन के लिए बहुत ही स्पेशल रहती है. चिल्ड्रन जो है मदर्स के बिना नहीं रह सकते हैं. सो इट इज़ नेसेसरी डैट मदर्स शुड गो इन हॉस्पिटल्स फॉर रेगुलर चेकअप बिकॉज शी could not neglect her health as she has to see her family and children. चिल्ड्रन जो हैं हमेशा अपनी मम्मी को मिस करते हैं, उन्हें याद करते हैं, वह कितने भी बड़े हो जाए. मतलब चिल्ड्रन जो हैं किसी भी उम्र के पड़ाव में चले जाएं, वह अपनी माँ को कभी भी नहीं भूलते हैं. Once I had read a quote by someone which every children should remember. Once writer had read a quote someone which every child should remember. मीन्स हर बच्चे को यह याद रखना चाहिए कि if you have a mother, treat her with gentle care, for you will know her value when you see her empty chair. If you have a mother, treat him lightly. Means if you had not a good behavior with your mother, you will miss them. You will know them their value when you see her empty chair. On a cold wintry morning, Mommy left the world announced. Probably it was a cardiac failure. Once morning when it was cold day, Mummy left the world without any indication. Probably it was a cardiac failure. वह कार्डिक फेलियर के वजह से मरी थी. कार्डिक फेलियर मीन्स व्हेन योर हार्ट स्टॉप्स टेम्परली और परमानेंटली, इट इज़ कॉल्ड कार्डिक फेलियर. बिकॉज ऑफ कार्डिक फेलियर his mother left the world in a cold day. She was in a bathroom singing a melodious hymn. I failed to understand and when the music stopped.
Once writer's mother was singing song in the bathroom, one type of bhajan song, and writer didn't know when this hymn bhajan stops. From this lesson we learned that mother is so important for us. We should respect our parents, especially mothers. सो इस लेसन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली मदर्स का, क्योंकि कोई सी भी पीढ़ी हो, कोई सी भी सेंचुरी हो, मदर का प्रेम जो है कभी भी चेंज नहीं होता है।